Hello everyone, I am Soumyaranjan Pradhan. I welcome you all to Ecopros Hot Seat. It is a unique platform for aspirants preparing for various competitive exams to get deep insight and have a better approach towards their preparation. Let me explain you the uniqueness of this show. We will be hosting various experts from different fields who will be having their own uniqueness in their own respective fields. Welcome, sir. Welcome to the hot seat. Thank you. Thanks a lot. Okay. Hope the seat is not that hot. It's As it is named hot seat, you know? no, it's not that hot as of now. Ab tak to nahi hot. Okay. Let me see how it comes. So gradually it will just go into that okay, mood. Let me. AC Okay. is working fine. It's fine. Because we have lots of questions from the students around. Okay. So it will be mostly a question answer. Questionnaire session, yeah, exactly. Fine. So that means are you getting live question from students or you have? We have already had the questions from the student itself Okay. Fine. to what we have prepared and all. And what all things are they preparing for? They are preparing for various competitive exams starting from your SSC banking to UPSC exams. Okay. So they you have a whole lot of students. yeah, exactly. Fine. Thank you. Okay. So shall we start, sir? Yeah, of course. Okay. So coming to the first question itself. So I just saw to your professional background, and I just saw your journey, your educational journey, and I was able to find out. I was quite surprised, in fact. Yeah, you did not pursue economics professionally, but you were able to crack various national level exams, Yeah, that's right. which is concerned about economics. So what was the reason behind it? How were you able to crack various exams, but you did not had a professional economics qualification? Yeah, that's right. In fact, on the outset, actually, I would like to thank Ecopros for hosting me. In fact, I have seen lot many shows wherein they used to invite lot many professionals and all. In fact, I was also looking for some stage or some platform type of thing wherein I can address to concern of students. In fact, it's a passion for me to teach, in fact, or to get them aligned with the right way of preparing. If I start with many students might not be knowing much about me because I'm not a civil servant as of now, right? Though I'm working as a civil servant, but I'm not a pure civil servant. Neither I'm an IAS nor I'm an IPS. Or else they might have seen maybe many videos. But you went to NABARD. That's great. Yes, fine. That's fine. It's okay. In fact, currently I'm not with NABARD. Currently I'm working with CSCP. I'm on a 3-year deputation actually, wherein I'm taking care of the crop cutting experiment of 3 Eastern Indian states, for example, West Bengal, Odisha, and Chhattisgarh. So these are all very latter stage of my career, right? It has been I joined CSCP maybe just before the outbreak of this COVID-19. Okay. So if I start with, I did my mechanical engineering, right, way back. It's been already 7, 8, 9 years. I had never interfaced. In fact, I had never was in no way in any sort of environment wherein there would be any talk of any economics, in fact. Gradually, I started with engineering job. Then after I went for some sort of business and all. And ultimately, there was a deeper interest towards civil service. In fact, right, for example, childhood से ही थोड़ा मन में रहता है कि नहीं, I would become a district magistrate or a civil servant or a SP or something like that. So when I thought कि नहीं, it's high time I should start preparing. In fact, I never thought of all this during my engineering or graduation. But after getting into real-time business, when I faced with lot many difficulties, I thought, yes, civil servants do play a very vital role. And in fact, they are endowed with lot many opportunities. In fact, I won't tell them as powers, in fact, but rather they do have that ability, or they have been endowed with all those benefits and all those, instruments, in fact, particularly. They can actually bring in a lot many changes into the system, particularly because you see it's not every time about a particular individual he is getting benefited. The entire system or the entire machinery can get benefited from civil servants. So it all started in around 2016, if I remember exactly. I was absolutely in the lurch. UPSC में आपको optional लेना पड़ता है. So general studies, जो compulsory papers, तो by default you have to read it. You cannot avoid anything, though certain portion still pains me a lot, like culture and everything. But optional subject, so far as I know,
तब तक जो मुझे ज्ञान था, इनफैक्ट जो भी सारे सीनियर्स थे, कुछ फ्रेंड्स ऑलरेडी दे वर प्रिपेयरिंग इन दिल्ली एंड एवरीथिंग. आई वाज इन केओंझर पर्टिकुलर, इट्स अ वेरी स्मॉल डिस्ट्रिक्ट. तो मेरा थोड़ा बहुत उनसे बात होता रहता था. एंड दे यूज्ड टू टेल वन थिंग कि शक्ति, यू शुड गो फॉर दिस सब्जेक्ट, यू शुड गो फॉर दैट सब्जेक्ट, यू शुड गो, व्हाई नॉट जियोग्राफी, बिकॉज यू हैव ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. साइंस बैकग्राउंड तो जियोग्राफी थोड़ा साइंटिफिक थोड़ा है तो अच्छा लगता है, तो यू कैन स्कोर वेल एंड एवरीथिंग. बट I talked to someone, in fact, I won't divulge his name now. At the end, I would tell. He suggested me one thing, Sakti, and in fact, that was perhaps the best advice in my life I have ever got. So far as I do understand, reading something or learning a new thing is no way difficult these days. In fact, things have become so simple these days because उस टाइम में तो ना 4G था ना कुछ था, right? There used to be very small phones and everything. So you need to be absolutely determined, right? You need to, in fact, you need to unearth many sources at that particular point of time. And I was staying in a very remote place. Exactly, there was very less level of fidelity there. You won't find even. अगर मैं छोटा सा बात बोलूँ, when I started my preparation, I tried reading newspapers. For example, if you talk about Hindu, if you talk about Business Standard, if you talk about Live Mint. दिस पेपर वर नॉट अवेलेबल दैट टाइम. वहाँ पे मैं जहाँ रहता था ना, वहाँ पे ये सब पेपर्स एक्सेस का नहीं था बिल्कुल भी, राइट. एंड सारे शायद ये बिजनेस स्टैंडर्ड वगैरह अभी जो ई पेपर फॉर्मेट में आ जाता ना, उस टाइम नहीं आता था. एंड यू सी इंटरनेट वॉज सो कॉस्टली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट ग्रेजुअली व्हेन दिस जियो एंड एवरीथिंग केम, थिंग्स बिकेम ईजियर. One thing I could understand after interacting so many people, maybe around for 3-4 months, I kept on interacting what to take, what not to take. One thing I could understand, in fact, in order to excel in something, it's just not about scoring marks actually. Clear, you see, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि राइट, मैं एक ही बार तैयारी करके मैं सब कुछ निकाल लूँ, सब कुछ कर लूँ. अब कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऑल ऑफ ए सडन मेरे दिमाग में आ गया सिविल सर्विस में बैठ लूँ, लिख लूँ, हो जाएगा. ऐसा नहीं होता. इनफैक्ट आप बहुत सारे न्यूज़ भी ऐसे देखते हो कि बच्चे राइट 21, 22 साल में भी दे यूज्ड टू टॉप यूपीएससी, नॉट जस्ट क्रैक, दे टॉप. बट इट्स नॉट दैट कि बस एक ही साल पढ़ के उसने कर लिया है. वो 3-4 साल पुराना, राइट, +2 के टाइम से 10th के टाइम से वो प्रिपरेशन यूज्ड टू बी कॉम्प्रिहेंसिव. मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गया था कि कोई ऑप्शनल पेपर वही होना चाहिए जिसमें आपको डीपर इंटरेस्ट हो. उस टाइम तक I do not know how actually I had developed an interest towards economics. During my engineering even, I used to involved with lot many business news. बिजनेस में मैं थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखता था. सो आई यूज्ड टू रीड अबाउट बिजनेस, आई यूज्ड टू रीड अबाउट इकोनॉमिक्स. दो आई वाज नॉट दैट गुड एट इकोनॉमिक्स, बट आई यूज्ड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या है ये रेपो रेट, क्या है रिजर्व बैंक का काम, क्या है. थोड़ा बहुत मैं पढ़ने लगा था. सो आई केप्ट ऑन रीडिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि इकोनॉमिक्स का इनिशियल इंसिपिएंट स्टेज है. एंड दैट इन फैक्ट चेंज माई एंटायर द वे आई वॉज लुकिंग एट द वर्ल्ड. I started understanding people more when I started reading economics. In fact, how do they behave? Particularly in the financial domain, how do they behave? I could understand people कि how are they responding to different changes. For example, किसी भी चीज़ का price change होता है, society में कुछ आता है. Though certain changes, they might not look as if they are economic, but they might be quite social, right? They might be quite personal even. How does somebody's emotion in fact influences his financial decisions, right? After only reading economics, I could understand that and I was good at it. In fact, I felt so good about it. In fact, at certain point of time, I thought myself, I am so powerful in fact. Okay. जो मेरे surrounding में जो भी सारे लोग थे, I thought yes, I do understand people more than anybody else's. So I had a feeling of empowerment with that paper. And that in fact was the prime reason why I kept on studying. And आपने सही बोला वो चीज़ कि neither I did any commerce or grants. मैंने आर्ट्स भी नहीं लिया. जो मैंने इकोनॉमिक्स वो 10th में पढ़ा था, राइट, वो जो 10th लेवल का जो भी होता है बेसिक्स. Then after I kept on reading. Then I started appearing for exams various, right. During that preparation of UPSC, I got lot many notification. For example, NABARD का notification था उस टाइम, IRDAI का notification था in fact. एंड आई वुड टेल यू वुड फाइंड बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता. मेनी पीपल इन फैक्ट, यू सी व्हाट हॉट्स अस द मोस्ट और व्हाट इन फैक्ट एम्पावर्स अस द मोस्ट. आई अपीयर्ड फॉर IBPS प्रीलिम. बैंकिंग का एग्जाम होता है IBPS, आपको पता होगा, इट्स अ कंबाइंड एग्जाम. आई फेल्ड इन द प्रीलिम, लाइक आई फेल्ड टेरिबली. एंड इन द वेरी सेम ईयर आई क्रैक्ड NABARD grade B. 7 posts were there. Nobody even believes as if now. NABARD का grade B exam purely, these are all right relating to agriculture, relating to economics. आपको पता भी होगा थोड़ा बहुत, clear. And in fact
पूरा इन डेप्थ एग्रीकल्चर ही पढ़ना पड़ता था, और हमने कभी एग्रीकल्चर पढ़ा ही नहीं है, दो आई बिलोंग टू ए फार्मिंग फैमिली, बट आई हैड रेयरली गॉन टू एनी फार्मिंग फील्ड्स. So you had the practical knowledge of it. नो आई डिडंट हैव एक्चुअली. मैं कभी खेत अपना देखा भी नहीं था मेरे, राइट, फार्मिंग लैंड्स कहाँ पे हैं क्या मेरे, उतना थोड़ा बहुत आइडिया नहीं था. मेरे बड़े भाई रादर ही इनटू आर्मी, ही नोज मोर देन मी. एंड एग्रीकल्चर मुझे कभी इंटरेस्ट भी नहीं गया था. Only after reading economics I could understand कि how agriculture plays such a big role in any economy or any even majority of our population. उनका लाइफ तो पूरा एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ होता है. Then I started reading. उस टाइम क्या हुआ ना, when I felt more powerful or more empowered in fact, सारा का सारा चीज़ मुझे easy लगने लगा. That means you see, I hated chemistry like anything during right my +2 days. I managed to score good marks though, but I hated it like anything. But when it came to soil science for example, right, I do teach people as of now. आज के डेट में मैं लोगों को पढ़ाता हूँ थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, एंड दे yes, and you might have seen my some classes में भी, and they are really surprised कि ये बंदा मैकेनिकल इंजीनियर है कि एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है. So this is not something to take pride in that actually. That feeling of empowerment in understanding things gave me the entire thing actually. वो राइट, आई यूज टू रीड. मैंने कभी ज़िंदगी में 3 घंटा से ज़्यादा पढ़ा नहीं था तब तक, टिल वाट एवर माइट बी. आई प्रिपेयर फॉर मेडिकल इवन फॉर 1 or 2 years. मैंने वो क्रैक तो नहीं कर पाया, अच्छा हुआ नहीं होता, अच्छा डॉक्टर कभी नहीं बन पाता मैं. बट उस टाइम में भी इवन ड्यूरिंग द पीक डेज ऑफ प्रिपरेशन, मतलब जैसे कि प्रीलिम में मेन एग्जाम आने वाला है 2-3 दिन 10 दिन है, तब भी मुश्किल से मैं दिन का 2-3 घंटा पढ़ ही पाता था. बट वंस आई स्टार्टेड रीडिंग इकोनॉमिक्स, आई डेवलप दैट विद इन मी कि मैं 7-8 घंटा 10-10 घंटा एक दिन का पढ़ सकूँ. एंड इन फैक्ट इट वॉज एब्सोल्युटली फन रीडिंग इकोनॉमिक्स, एंड द रेस्ट इज द हिस्ट्री. सो वन थिंग आई फेल्ट कि अनलेस अंटिल यू हैव ए डीपर इंटरेस्ट इन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इट बिकम्स लिटिल टफ. सो मच ईजी. कोई भी सब्जेक्ट बहुत ईजी भी हो सकता है. मैंने पीपल, आपने सुना भी होगा, जो कि यूपीएससी बच्चे तो हैं, मैं भी आपके ऑडियंस में, बच्चे बोलते हैं कि सर सोशल साइंस, सोशियोलॉजी ले लूँ, छोटा सा पेपर है, पॉलिटिकल साइंस ले लूँ, डुअल यूज हो जाएगा. तो ऐसा होता ही है, राइट. आज के डेट में फॉर एग्जांपल फिलोसॉफी एक ट्रेंड चल रहा है, राइट. टॉपर्स एंड एवरीथिंग दे डू इंजीनियरिंग करके फिलोसॉफी ऑप्शनल लेके दे इज टू टॉप. सो ये सब आता ही रहता है, राइट, बिकॉज हाँ ये ट्रेंड चलता है. इनफैक्ट यू सी दिस ट्रेंड आर एक्चुअली द सोर्स ऑफ कन्फ्यूजन एक्चुअली. दैट इज द की, यू नीड टू अंडरस्टैंड. कोई दूसरा ने फिलोसफी लेके स्कोर किया, हाउ कैन आई बी सो इंश्योर कि मैं भी ले लूँ तो मेरा भी अच्छा हो जाएगा. शायद उसको फिलोसफी अच्छा लगता था. आर यू गेटिंग इट? एंड दिस इज व्हाट आई लर्न रीडिंग इकोनॉमिक्स. इंडिविजुअल का प्रायोरिटी अलग होता है. Trying to copy. Your utility, your level of satisfaction in reading philosophy might not be the same as me. So I need to identify कि मुझे कहाँ पे खुशी मिल रहा है पढ़ के. Exactly. This has been the key, and I love economics like anything. And in fact, अगर आप उस टाइम की बात करें, मैं अब तक भी I do not have any graduation or even a post graduation in economics. But yes, I'm fortunate enough to even teach from 12th students to even postgraduate students. Okay. So this it's all about interest. In fact, I would tell particularly. Okay. And this is all about. Anything else is? Okay. Sir, so we just need to go back to the second question. Okay. Yeah. So what I felt, I had met up with various aspirants. They are just preparing for various competitive exams. To what I felt, there are many exams to which we just need to go through the basic level of economics. Yes. While for other exams, we just need to go in depth for economics. So for those all students, what would you recommend? You see, the recommendation would be of two kind actually. For example, let me name some exams. If you are preparing for SSC, for example, right, or in fact if you are preparing for any railway type of exams or any even certain IBPS का जो banking का exam रहता है, you just need to understand basics of economics and finance. उसमें you don't have to know कि पूरा in depth में क्या है, आपको नहीं समझना, ज़रूरत ही नहीं होता वो सब exams के. But there are certain exams जहाँ पे you need to be a pro in fact. Clear? If you talk about Reserve Bank, if you talk about SEBI, अभी opening चल रहा है अभी, and in fact maybe some students might have cleared NABARD grade A, or somebody might be already preparing for civil services जिनका भी exam prelim है. तो ये सारे exams जो है ना, you need to have a good in-depth knowledge in economics. Clear? So what would be my recommendation if I suggest exam का perspective एक है, आपका life का perspective अलग है. It is better if you match them both. Okay. मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूँ. You take up any newspaper today,
मैं यूपीएससी से स्टार्ट करता हूँ. यूपीएससी प्रीलिम का सिलेबस एक ही है, करंट अफेयर्स, एंड दे रेयरली मेंशन एनीथिंग. मेन एग्जाम्स होता है ना, उसका एक डिफाइंड सिलेबस है. प्रीलिम का तो कोई सिलेबस नहीं है. करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. तो क्वेश्चंस कहाँ से आएगा? करंट अफेयर्स से ही आएगा मोस्टली. क्लियर? ओके. यू टेक अप एनी पेपर टुडे, आज के डेट में दिस इज जस्ट अ रियलिटी चेक दैट इन फैक्ट आई वुड टेल ऑल द स्टूडेंट्स टू कैरी इट आउट. हर कोई स्टूडेंट को मैं यही बोलना चाहूंगा, यू सी देयर इज नथिंग कॉल्ड अ सीक्रेट एक्चुअली. वी नीड टू बी लिटिल बिट मोर स्मार्ट. थोड़ा स्मार्ट बनना होता है. पढ़ना तो हार्डवर्क तो करना ही, आई वोंट टेल कि देयर इज एनी अदर अल्टरनेट, बट थोड़ा स्मार्टली थोड़ा तरीका अपनाना होता है. सी, अगर सिलेबस आपका करंट अफेयर्स है, क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? पेपर से ही आएंगे मोस्टली. एंड यू पिकअप एनी न्यूज़ पेपर आज के डेट में जो कि नेशनली सर्कुलेटेड है, वेल एस्टैब्लिश्ड पेपर. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट टाइम्स ऑफ इंडिया, इफ यू टॉक अबाउट इंडियन एक्सप्रेस, इफ यू टॉक अबाउट हिंदू, इफ यू टॉक अबाउट इनफैक्ट अगर थोड़ा बिजनेस की तरफ जाएं तो बिजनेस स्टैंडर्ड, लाइव मिंट और फाइनेंशियल एक्सप्रेस, वट एवर यू टेक, कोई भी एक नॉर्मल पेपर ही आप उठा के ले लेना, राइट, यू वुड फाइंड 60% ऑफ द न्यूज़ इज अबाउट इकोनॉमिक्स. अराउंड 60 to 70% अगर पूरा का पूरा न्यूज़ का आप देखें, अराउंड हार्डली 20-30% न्यूज़ टू पॉलिटिकल और समथिंग रिलेटेड. रेस्ट 70% पूरा का पूरा वेटेज वो इकोनॉमिक्स का रहता है, एनवायरनमेंट का रहता है. आज का भी पेपर आप लेके देख लो, वही आपको मिलेगा. Around 60 to 70% of the entire paper is composed of economics. Either you are talking about अभी के टाइम में फॉर एग्जाम्पल रेसेशन, एंटायर रिजर्व बैंक का जो पूरा का पूरा स्टिमुलस जो भी है, फिजिकल स्टिमुलस जो भी आ रहा है, राइट. अभी आज के डेट में हाउ वी इनफैक्ट रिसेंटली हमने वो इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर को, राइट, 1 साल के लिए डिले कर दिया, ये सब कुछ, राइट. सो कोई भी पेपर आप ले लें, 70% क्वेश्चन तो आपका एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स से ही होगा. अभी देख रहे हैं आप, राइट, ग्लोबल जीएजी एमिशन भी 17% डाउन है फ्रॉम लास्ट प्रीवियस ईयर्स बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एंड एवरीथिंग. तो क्वेश्चन तो यही, अगर 70-60% आपका इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट का न्यूज़ है तो भाई क्वेश्चन भी तो उतना ही आएगा वहाँ से. दिस इज वेरी कॉमन लॉजिक दैट एवरीबडी नीड्स टू इनफैक्ट अंडरस्टैंड. क्लियर? सो मेरा सिंपल सा, राइट, इट इज़ माई सिंपलेस्ट एडवाइस. इवन मेरा एडवाइस तो नहीं है, आई डिड इट दिस वे. आई नेवर, फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी को रिकमेंड तो नहीं करना चाहता, बट दिस इज हाउ आई डिड. इनफैक्ट कोई एग्जाम जिसमें इकोनॉमिक्स का वेटेज थोड़ा कम हो, दैट मीन्स ऑन अ वेरी बेसिक लेवल, हाउ कैन यू डिसाइड एक्चुअली? आई एम टेकिंग यू थ्रू यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू मैं आपको लेके चलता हूँ. एवरीबडी सेज इकोनॉमिक्स एक प्रिलिमिनरी लेवल में आपको समझना जरूरी होता है इफ यू आर नॉट टेकिंग यूपीएससी इकोनॉमिक्स एज योर ऑप्शनल. इफ आई टॉक अबाउट 2018, many of my friends, those who had cracked PI for 3-4 years, they have been cracking the PI, but unfortunately they could not make it to the merit list. They could not even clear the prelims. Do you know the reason? Because the reason is that there were around 18 or 19 questions related to pure agriculture in 2018 prelims. Okay. And you see, somebody who has this key actually कि भाई current affairs is the syllabus and I need to read, keep on reading and stay myself abreast with the current affairs. 2018 if you remember, 2017 और 18 उस दौरान जो चल रहा था, नेशनल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा था? What was the theme that was all around? Farmer distress, strikes, suicides and everything. तो क्वेश्चन तो आएगा ही ना भाई वहाँ से ज़्यादा. This is the way actually you need to understand. सो अगर कोई एग्जाम जो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है पूरा, फॉर एग्जाम्पल समबडी ऑप्टिंग फॉर इकोनॉमिक्स एज एन ऑप्शनल, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इफ यू टॉक अबाउट रिजर्व बैंक, इफ यू टॉक अबाउट नाबार्ड, इफ यू टॉक अबाउट सेबी फॉर एग्जाम्पल, अभी you need to be a pro in economics. You cannot take any sort of excuses there because you see these are all professional bodies. यूपीएससी तो थोड़ा जनरल बॉडी है, बट इफ यू टॉक अबाउट रिजर्व बैंक या फिर सेबी या फिर आईआरडीए या फिर नाबार्ड और इनफैक्ट आईबीबीए एंड एवरीथिंग, दीज आर ऑल प्रोफेशनल बॉडीज. यू नीड टू बी एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस. दैट एग्जाम एक्चुअली, इनफैक्ट दोज पर्टिकुलर एग्जाम दे डू डिमांड यू टू बी ए प्रो. सो देर इज नो ऑप्शन अदर देन बिकमिंग स्ट्रॉन्ग एक्चुअली. आप many of my colleagues even, somebody is working in Reserve Bank, somebody is working in SEBI even, one thing they do say कि though we might have cleared the exam, but on a later stage while working on the field we had to read economics actually. ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि इकोनॉमिक्स में बिना प्रो बन के आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी. That's a very good insight from you.
for the question. So coming back to the third question itself. So sir, can you just tell me what are the various scopes for a non-economic graduate for economics, taking economics into account? Yeah, absolutely. There are a hell lot of options, in fact. See, if you say you same thing, you can compare with my career actually. I was purely an engineering graduate. So, but they do give all the options. In fact, if you appear for Reserve Bank, grade B for example, you just need to be a graduate. They don't ask for any specific discipline. Clear? And if you think about this NABARD also, or in fact you SEBI also, SEBI doesn't allow to general graduates as of now, but they do allow BTechs. Clear? So there is a hell lot of option in fact. And for example, ये सारे बहुत हाई पेइंग जॉब्स भी होते हैं ना आज के डेट में. So there is a lot of competition too, but there are a lot of option. That means what? Somebody might be thinking it this way कि I didn't read economics during my graduation or I don't have even MBA. Will I be in a position to clear all these exams? ये बहुत बड़ा confusion जनरली रहता है कि मैंने इकोनॉमिक्स ढंग से नहीं पढ़ा है ग्रेजुएशन में, तो क्या था साइंस में फॉर एग्जांपल कर लिया, या फिर मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, सो कैन आई क्रैक दिस एग्जाम्स? Yes, it's absolutely that. It's not that difficult if you have the real intent within you. आज के डेट में बहुत ईजी हो गया ना भाई, सब कुछ पर्सनलाइज कोर्सेज भी मिलने लगे हैं ऑनलाइन. सो इट्स नॉट दैट टफ. आपको इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं, बट येस इंटरेस्ट है तो कर सकते हैं. ऑप्शंस बहुत सारे हैं. इफ़ यू आई एम जस्ट गिविंग एन ब्रीफ फॉर एग्जाम्पल ओवरव्यू. प्राइवेट सेक्टर में द सैलरी इज काउंटेड इन टर्म्स ऑफ CTC, राइट? यू मस्ट बी नोइंग कॉस्ट टू कंपनी एंड एवरीथिंग. इफ़ यू टॉक अबाउट नाबार्ड ग्रेड ए फॉर एग्जाम्पल, असिस्टेंट मैनेजर जो भी ग्रेड्स रहते हैं, राइट, द CTC इज अराउंड 15 to 17-18 lakhs. इफ़ यू एड वेरियस अदर बेनिफिट इट टू गो बियॉन्ड दैट इन फैक्ट. If you talk about grade B of Reserve Bank या फिर NABARD, they do have the same pay scale and the package is around 20 to 23 lakhs rupees CTC. अगर CTC के टर्म्स में अगर बात करें, so it comes out to be with along that, right? So ये थोड़ा confusion रहता है लोगों में कि 22-23 लाख का पैकेज तो सिर्फ IIMs में ही मिलते हैं. ऐसा नहीं है. You can simply be a graduate, crack the exam, you can land up there. In fact, many of my colleagues and many of my group circle, they are from IIMs, various IIMs. Clear? So it's not that a big thing. और ये तो सबसे बढ़िया चीज़ है एक्चुअली दैट आई नीड टू शेयर टू इन फैक्ट ऑल द स्टूडेंट्स. Many bright students in fact, because of financial issue, they used to crack the exam but they used to write not in a financial position. In fact उनको support नहीं करता है कि they to go abroad or to go or pursue some sort of MBA in some IIM because they are hell bent of costly as of now, right? आज के डेट में तो बहुत costly है. Recently one of my close friend, he graduated from IIM Bangalore and he had to spend around 35 lakh rupees. Clear? So ये हर किसी के एंड में पॉसिबल नहीं होता है बिकॉज लोन्स के वगैरह में बहुत टेंशन रहता है, राइट? हर किसी का सेविंग्स उतना नहीं रहता है कि 35 लाख एट ए टाइम अफोर्ड कर पाएँ, कुछ कर पाएँ. वन थिंग दैट आई कैन टेल इन फैक्ट कि येस, वहाँ पे जिस लेवल का जॉब मिलता है, जो एवरेज पैकेज रहता है, उससे बढ़िया पैकेज तो यहाँ पे भी मिलता है. एंड यहाँ पे आपको ना 35 लाख चाहिए, नीदर यू डू हैव टू वेट फॉर 2 more years. 2 more year MBA लेने के बाद भी यू नीड टू सिट फॉर ए प्लेसमेंट. ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट ए स्काई रॉकेटिंग पैकेज यू हैव टू बी दैट. इन फैक्ट आपको उस मतलब उस टाइप का भी स्टूडेंट होना ज़रूरी है, परफॉर्मेंस उस लेवल का होना ज़रूरी होता है. बट येस, अगर आप में जुनून है, मेहनत करने का मन है और लगन है, इट्स नॉट दैट अ बिग थिंग. आप गरीब हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. दीज आर द ऑप्शंस जो हर किसी के साथ ओपन है. यू कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट एन एग्जाम. If you crack it, you can land up a package very close to 20 to 30 lakh rupees yearly also. So this is all about. Anything more? Yeah, thank you for the answer, sir. So coming back to another question from students itself. So what should a student ideally after the last semester, like for any of the graduate exams or the MBA exams, should prepare for or look for in terms of competitive exams and all? They to start preparing from the graduation itself. I think they are already doing it, but it's terrible if they are not doing it. Okay. Because you see, graduation is perhaps something we call it ना, BTech में हम बोलते हैं कि 4 long years of holidays. Graduation में तो 3 साल क्या 6 साल of long holidays बोला जाता है. But perhaps graduation is the time that you should use it to the fullest. Okay. There is no point of waiting. एंड देन ऐसे बहुत सारे जो हमारे राइट उड़ीसा के बच्चे होते हैं ना, ऐसे जनरली रहता है कि लेट माई ग्रेजुएशन गेट ओवर देन आई विल जॉइन समथिंग.
let my MBA get over. If I'm getting placed with something, then it's okay, or else then I will look for something else. There is no point in waiting, you see, right? The world runs on compound interest. Agar if you are behind the simple interest, it's fine. You won't be ending somewhere farther. So it is right way to straight away prepare from. आप दिल्ली वगैरह में जाके देखिए, इनफैक्ट दिल्ली क्या बिहार की ही बात करें, इनफैक्ट आई स्टडीड इन नवोदय विद्यालय. सो 9th क्लास में हम लोगों का स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम था टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन. मतलब नॉन हिंदी रीजन से हिंदी बच्चों का एक्सचेंज होता. 30% स्टूडेंट यूज टू एक्सचेंज स्कूल्स. सो हमारे स्कूल पे जो वहाँ के बच्चे आते थे, आई हैव सीन इनफैक्ट 9th क्लास से ही दे यूज टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर IITs एंड एवरीथिंग. और हमें पता भी नहीं था 10th 12th एग्जाम तक. इनफैक्ट आई टेल यू माई स्टोरी, व्हेन आई अपीयर्ड फॉर ओडिशा जे, आई डिडंट इवन नो कि एट ए टाइम आप मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों एग्जाम आप दे सकते हैं. दिस वाज आवर सीन क्लियर. बट दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एंड व्हाट इज द रिजल्ट? somebody was into BITS Pilani, somebody was into IITs and everything. See, everything runs on compound interest. दुनिया में simple interest बस टेक्स्ट बुक में मिलता है और कहीं नहीं मिलता. World runs on compound interest. If you are wasting your time now, you will have to pay for it. Every choice has an opportunity cost, so far as we tell in economics. So as आप नहीं पढ़ेंगे तो आगे आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा ही. So it is better actually. 3 साल पढ़े हैं हाथ में, 4 साल है, अगर किया भी नहीं अभी फाइनल से में जनरली कन्फ्यूजन कब आता है? आई डू हैव राइट सम स्टूडेंट्स मेरे साथ भी लिंक्ड हैं. उनका मेन कंसर्न यही रहता है कि सर मैं पीजी में जाऊँ, मतलब मेरे प्रोफेशनल पीजी में चला जाऊँ. इनफैक्ट आई डू टीच मेनी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स टू. तो वो लोग बार बार पूछते रहते हैं कि सर शुड आई गो फॉर JRF, राइट, ICAR JRF प्रोफेशनल PG इनटू देयर पर्टिकुलर फील्ड, शुड आई गो फॉर सोशल साइंस, शुड आई गो फॉर एग्रोनॉमी, शुड आई गो फॉर ABM फॉर एग्जांपल. समबडी आस्क्ड वन डे कि सर आई एम गेटिंग कंफ्यूज फ्रॉम माय फ्रेंड्स इफ आई शुड बी जॉइनिंग ABM. मतलब व्हाट्स द रीजन? नो इफ आई जॉइन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट आई माइट बी ए CEO ऑफ ए एग्री बिजनेस प्रोडक्ट कंपनी समडे. मतलब येस ऑफ कोर्स यू कैन बिकम. क्लियर. सो दिस सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए पहले से. दिस थिंग्स शुड बी क्लियर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट और सेकेंड ईयर. हमारा यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ही वैसा रूइन किया हुआ है कि नोबडी टॉक्स अबाउट एनीथिंग, बस पढ़ लो, उसके आगे कोई नहीं बताता. यही चीज़ तो दिक्कत है. एंड दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म आर मच नेसेसरी कि समबडी हु हैज ट्रैवर्स द पाथ. हम राइट दिस हैज़ बीन द माई राइट. फॉर एग्जाम्पल मेरा लाइफ का मोटिव यही रहा है. इनफैक्ट दिस इज समथिंग दैट ड्राइव्स मी एवरी टाइम. मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स टेल कि राइट आप 5 बजे का उठने का क्या जरूरत है भाई, इतना अच्छा कमा रहा है, 9 बजे तक उठो, 10 बजे ऑफिस पहुंच जाओ, फिर शाम को 5-6 बजे आ जाओ. बट आई वेकअप एट अर्ली मॉर्निंग. मैं सुबह उठ ही जाता हूँ एंड आई माई डे इन फैक्ट स्टार्ट फ्रॉम 5 o'clock to night 12. So that has been my life in fact, and that is my one principle that drives me through actually. It's like that ki I keep on posting, I keep on writing that line everywhere. It's better to sweat in training than to bleed in war. Okay, that's a nice line from your side. Yeah, so this is what we should be. Every time we should be curious about we ourselves. अगर हमेशा सिखाया जाता है कि you should not be selfish, you should be selfless. बट कैरियर के मामले में तो सेल्फिश होना जरूरी होता है. दिस इज व्हाट आई हैव. इनफैक्ट आई वोंट सजेस्ट समबडी टू बी सेल्फिश सोशियली, बट सो फार एज कैरियर इज कंसर्न्ड वी हैव टू बी एब्सोल्युटली सेल्फिश. You cannot keep on wasting, and at the end you should be, see, rather than just desiring for something, be deserving. Na, that is better. Yeah. Why to wait कि मैं, for example, I joined NABARD when I was already 26-27. Clear? Maybe I was even older than that even at that point of time. अगर मैं 21-22 में ज्वाइन कर लिया होता, फॉर एग्जाम्पल अभी नाबार्ड के चेयरमैन चेंज हुए, ही ऑल्सो ज्वाइंड एज ए ग्रेड B, एंड टुडे ही इज द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड. And maybe by the time I will be retiring, I might have to retire as a CGM maximum at a greater scale, my age and everything. तो आई जो 5-6 साल मैंने वेस्ट किया, अगर मेरे को इंजीनियरिंग टाइम में ही पता रहता कि राइट दीज आर सो ऑप्शंस एंड एवरीथिंग, तो मैं भी कर लेता शायद. तो दिस इज द थिंग एक्चुअली. मेरा एड्रेस का आज का मेरा मेन कंसर्न यही था कि मेक पीपल अवेयर कि ज़माना चेंज हो रहा है भाई. अभी सी प्राइवेट सेक्टर का हालत ख़राब ही है. इनफैक्ट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम इनफैक्ट टू रिकवर. ऐसे पैकेज दे दिया उठ जाता है, ऐसा नहीं होता है, राइट. इट हैज़ इट्स ओन टाइम एक्चुअली. सो आफ्टर दिस इनफैक्ट द गवर्नमेंट एग्जाम्स, पर्टिकुलर दीज क्रीमी लेयर जॉब एग्जाम्स, इनफैक्ट इफ यू टॉक अबाउट सेबी, रिजर्व बैंक, दे पे द हाइएस्ट. इनफैक्ट इन गवर्नमेंटल सेक्टर दे पे द हाइएस्ट. सो हेल बेंट कॉम्पिटिशन तो होने वाला है. सो अगर आप कॉम्पिटिशन से डरते हैं तो घर बैठिए, लॉकडाउन एक्सटेंड अपने आप को कर ही लीजिए, या फिर आपको पढ़ना पड़ेगा. दिस इज द थिंग दैट यू कैन डू. देयर इज नो अल्टरनेट. करना तो पड़ेगा ही. सो दिस इज ऑल आई होप. Or do you have anything else? Coming back to the next question, we do have a lot of questions for you. Okay. Around 4 to 5 more questions. No issues.
So, any specific advice for guys, those who are out there preparing for UPSC, RBI, NABARD, or SEBI Grade A? Like it will be coming very soon. The notification are already out. So, any specific advice? I hope I explained it little bit, because these are all high paying jobs. Okay. Since they are high paying, and that too on the governmental sector, they will have hectic neck break competition this year. इससे पहले when we started appearing for exams, उस टाइम ये सारे एग्जाम उतना पॉपुलर नहीं थे एक्चुअली. हाँ, सुने थे कि रिजर्व बैंक कुछ है, उसका एग्जाम कुछ होता है, बट वी नेवर न्यू कि इसका पैकेज 20-25 lakhs है. हमें पता ही नहीं था इनफैक्ट. बट आज के डेट में आई होप आफ्टर दिस सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, पीपल नो एज ऑफ नाउ. सो यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव. मैं क्या बोलूँ, दीज आर ऑल हाई पेइंग जॉब्स. यू हैव टू बी एक्सपर्ट बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगा. क्लियर? सो दिस इज ऑल. और कुछ एनीथिंग एल्स इज? Okay, fine. Yeah. So, coming back to the next question, sir, is there any specific way of getting connected with the professionals like you, right? As you all are working in the field which the students aspire of, right? Because many students and peers, they are just preparing for the competitive exams like NABARD, RBI, SEBI and all. So they aspire of getting connected to the professional. As a mentor, they always used to have a mentor. They would like to have a mentor for themselves in their preparation stage and all. Yeah. So is there any way of networking with professionals like you? See, networking for mentoring purpose is actually something unique actually. You might not be that lucky every time. Clear? If I tell about me myself, I do mentor many students. Some are already have cracked Odisha Administrative Services. Some people have cracked Reserve Bank. Some people have cracked IBPS and everything. It depends on person to person actually, right? You cannot expect the same thing from everyone. But there is no formalized channel of in fact networking. You need, आज के डेट में हाँ, social media is the only way through which we network. But for effective networking, you need to have personal connection with them. So for me at least, I can tell you, yes, I am available everywhere. On YouTube, I do have a channel. On Facebook, I do have a page. And in fact, on Insta and everything, you can reach me out, no issues. Anybody, whoever he may be, he or she can reach me out, no issues. I am open. But more about rest, I cannot tell much. But yes, you need to have a personal connect actually to effectively or in fact, you see, प्रॉब्लम क्या होता है, राइट? वो एकलव्य का स्टोरी आपने सुना होगा, राइट? आइडियल देख के इमेजिनेशन एंड एवरीथिंग, that works it to certain extent, but आज के डेट में it is better. You see, there was a saying ना कि wise people they learn from their own mistakes. राइट? ऐसा लाइन था पहले, अभी ये चेंज हो चुका है ना. यू जस्ट इट इज़ नॉट एनफ जस्ट यू टू बी वाइज, यू हैव टू स्मार्ट, यू नीड टू लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स टू. क्योंकि और खुद मिस्टेक करके रिपीट करके ठीक करने का टाइम ही नहीं है अभी. और यू नीड टू रियली मूव फास्ट. सो दैट इज़ वाई ट्राई टू गेट, हर किसी को मेरा एडवाइस है, समबडी जिसको आप आइडियल के हिसाब से लेते हैं, इफ़ यू थिंक फॉर एग्जाम्पल कि हाँ इनसे मेरा कुछ वैल्यू ड्रॉ मैं कर सकता हूँ, देर आर चैनल्स यू कैन जॉइन वाया ट्विटर, राइट? यू कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड, परहैप्स ट्विटर इज समथिंग दैट राइट अट्रैक्ट्स everybody's attention and do people reply? Yes, I do. I too personally have got replies from various, right? In fact, we do have certain IAS officer, in fact, some young IAS officers, maybe आपको पता होगा, right? सोमेश उपाध्याय, right? He keeps on blogging about civil services, right? He has a page in Insta and he is already active in Twitter and he is very much active and he helps a lot, right? So there are people, if you wish, you can connect through them, right? Through social media channel ही है उसको, और कोई ऑर्गेनाइज कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि यहीं पे सारे लोग मिलेंगे, आई कैन चेरी पिक और समथिंग, ऐसा नहीं होता है. क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट. एनीथिंग एल्स? So we do have the next question, and it's all about not about graduation, rather it is about one step back. What about the plus two students, those who are appeared the exam, those who are going to appear in the month of July itself? Yes, CBSE has already declared. Yeah. Okay. Yes, this is very special question because I know someone who has been in a pathetic state because her exam got delayed and everything. I would say कि plus two for example, that stage is, it in fact it's like a wedge, what we call pivot or wedge. Before that your entire world was about studies, but after plus two your entire world is just not about studies.
यू गेट इनटू मेनी अदर थिंग्स, राइट? आप बहुत सारे और भी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं उस टाइम. आज के बच्चे चलो 10th के बाद ही इन्वॉल्व रह जाते हैं, वो अलग बात है. बट येस, यू हैव टू बी एक्साइटेड, राइट? आपको एक्साइटेड रहना है कि राइट, येस, सक्सेसफुली यू हैव पास्ड योर +2 विद गुड ग्रेड्स. But along with that, the landscape is changing actually. It's not a normal now. The new normal is you have to stay involved. You have to stay put and stay involved within your priorities. Clear? So perhaps ये audience में अगर कोई +2 का student है, in fact, he would be the, perhaps I can guess it, अगर सबसे ज़्यादा कोई benefited होगा ना, +2 का ही बच्चा होगा. See, उसके आगे अभी 3 और 4 साल, either 3 year or 4 years, as per the course he chooses. क्लियर? उसके पास पूरा का पूरा टाइम है. जैसे यूज़ करेगा उसका रिजल्ट आगे वैसा ही मिलेगा. इनफैक्ट लेट मी टेल यू, मैं कुछ लोगों को गाइड करता हूँ, दोज हु आर रेडी टू इवन क्रैक द एग्जाम, उनको भी 21 साल भी नहीं हुआ है. दिस इज द थिंग. एंड व्हेन डिड आई जॉइन नाबार्ड? आई वाज ऑलरेडी 26 year old. क्लियर? सो दिस इज द थिंग. सो इट इज़ ऑल अबाउट द अर्लियर यू प्रिपेयर. आप जितना जल्दी तैयारी करना चालू करते हैं, राइट? एंड इनफैक्ट सी, your preparation should be a journey actually. You should be, right, should keep on discovering things. And आप discover करते भी हो. There is no harm in discovering things, right? This is my, right, you need to, right, keep your eyes and ears open, and +2 के बाद तो you are matured enough to decide what is wrong, what is right also. That's all. Thank you. So coming to the last question. Okay, finally. Yeah. Okay. So this is a bit lengthy question and it is linked to you. Directly linked to you. So I had just seen your video on Facebook. It's named All the Policy Wrong Turn. Yeah. When can we expect the next video, as students are very eagerly waiting for that? Okay, thanks for the compliment by the way. In fact, जो video है ना, पहला वाला video, it's just an introductory video. Okay. You can expect the videos in next 2 days actually, which will try to start the essence actually. Okay. So I hope students have liked it, right? Yeah, they just loved it. Fine, thank you. For that Okay. reason, In fact, that's a 20 video series. Okay. And I can, right? मैं gradually, I was earlier technology हिसाब से मैं थोड़ा handicapped था. Okay. I could rarely do some sort of good recording or something. Imperfection. In fact, I was literally handicapped. Okay. Clear? I have lot many gadgets. मेरे पास गैजेट भरती हैं, बट आई वॉज रेयरली एबल टू यूज़ देम. बट नाउ येस, आई एम कैपेबल नाउ. सो जो भी वीडियो पहले था, इससे यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 3-4 बेटर टाइम्स का वीडियो आएगा. एंड यू कैन एक्सपेक्ट द वीडियो इन नेक्स्ट 2 to 3 days मैक्सिमम. So we'll be launching that. So it will be a series of videos. Yeah. Right? We'll be right pushing on videos gradually. Then I break up 2 to 3 days. Okay. Because of I do have other official obligations also. So I need to find out special time for that. But I will do it. No issues. Something that helps out student, I will perfectly do it. No issues. And thanks again for hosting me. I hope this is all about. And it was. So this was all about today's session. Today's special session, I would say. Right, with your deep insight knowledge which you are about to, which you just shared with us, and it will be a great help to the students, to those who will be watching this. My pleasure. My pleasure. It's so my thank pleasure. you, sir. Thank you. Great having you all. Congratulations. Thank you.